from 75 years to 100 years, this is laying the foundation for high quality education in our country. It also exposes the Indian mind to the best of the best in the world, and also the world then looks at India as a great potential for investment. And I would mention that the government might not have used the word private sector or corporate sector very categorically or repeatedly in the budget, but if you look at the schemes that have been announced, they have opened up an ocean of opportunities and very exciting opportunities for the private sector to jump in. To me, it is something like the asset monetization program that was announced during the course of the year that this budget has taken forward. Some of the exciting things that I would look at the drone technology being spoken about in the villages. Now this is super exciting for startups and for the private sector to cash upon. The ropeway story, of course, is a big thing in the private sector. The rollout of the 5G mobile services, great opportunity again for the private sector. And of course, I must mention as a fiscal expert, the government's efforts. And this has reflected in the GST getting a record performance in the month of January, which the FM announced. This Prime Minister's and this government's efforts at using technology to plug tax evasion is amazing. To me, the demonetization was just not a standalone phenomena. Today's budget also, the FM mentioned how they're going to ensure that tax evasion is minimized. So the use of technology and digitalization to ensure public finance and economic performance in the country is amazing, and I think the private sector has a great role to play in all of these. Right. Right, Dr. Singh, Minda, reactions have started pouring in. Let's listen in to Mr. Sanjeev Mehta from FICCI. मनरेगा के लिए क्या आउटले है वो हम एग्जामिन करेंगे, बट द इनिशियल फिक्की की फील है दैट इज टू कॉम्प्लीमेंट द फाइनेंस मिनिस्टर फॉर अ गुड बजट. हाँ जी. डिजिटल करेंसी, हाँ देखिए, जो कई चीजें अच्छी हैं बजट में, एक चीज नहीं है. हमें यह समझना चाहिए कि जैसे कंपनी में आप पूछें कि आपकी अच्छी कंपनी है तो एक चीज क्या है, वैसे ही बजट में आप नहीं बोल सकते हैं एक या दो चीजें क्या अच्छी हैं, कई चीजें अच्छी और हमने बताए हैं. अगर लेकिन ब्रॉडली हम एरियाज पिक करें, तीन चीजों में फोकस कर रही है. वन इज जो इकोनॉमी हमारी रिकवर हुई है, इसको ग्रोथ ओरिएंटेड बना रहे हैं. दूसरी जो है रिलीफ फॉर द पुअर, स्ट्रेस्ड है. जैसे अगर आप देखें एमएसएमई को और एक्सटेंड किया है, जो बेनिफिट था वो बहुत जरूरी था. और तीसरा है जो रिफॉर्म है लॉन्ग टर्म, इंफ्रास्ट्रक्चर में जो ये लोग इन्वेस्ट करेंगे, सरकार हमारी करेगी, उसका बहुत फायदा होगा. अगर आप देखें इससे कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस कम हो जाएगा, लॉजिस्टिक कॉस्ट कम हो जाएगी. तो ये सब जो चीजें बड़े बेहतरीन है हमारे देश के लिए. लेकिन जो आप बोल रहे हैं, जो इन्होंने वेरी एम्फेटिकली प्रोनाउंस किया है कि डिजिटल करेंसी इन द कमिंग ईयर करेंगी, तो ये हमें देखना होगा रिजर्व बैंक का क्या स्टेप है. एंड एटलीस्ट इसमें अभी एम्बिग्यूटी नहीं रही है. इट हैज बीन अ वेरी क्लियर स्टेटमेंट एंड लेट्स गो एंड सी हाउ इट इज डन. बट आई थिंक इट इज अ फार रीचिंग थिंग एंड वी नीड टू सी हाउ दिस इज मेड टू हैपन इन द कंट्री. देखिए, हर बार जो है फाइनेंस मिनिस्टर को बजट भी बैलेंस करना पड़ता. हम चाहते थे कि लोगों के हाथ में और पैसा मिले, इसलिए मैं बोल रहा हूं कि हमें मनरेगा का आउटले देखना होगा क्या है. एमएसपी भी सरकार ने 2 लाख करोड़ से ज्यादा आउटले रखा है, विच इज ऑल्सो अ गुड थिंग. लेकिन हो सकता था कि मिडिल क्लास के लिए थोड़ा टैक्स कम कर देते तो उनके लिए भी ज्यादा पैसा होता खर्चने के लिए. बट दैट हैज नॉट हैपन. बट आई थिंक ऑन एन ओवरऑल बेसिस आई वुड स्टिल से इट्स अ गुड बजट. So those were the reactions coming in from the FICCI president, Mr. Sanjeev Mehta, who is also a leader in the FMCG sector. So he was concerned largely about the spending on Manrega, which we're going to put hands in the rural sector. Right. In fact, more reactions, Mark, have started pouring in. Okay. Let's listen to each one of them one by one. बहुत ही ऐतिहासिक बजट है
जिसका एक बहुत ही स्पष्ट रोड मैप है, जिसमें 5 मौलिक मुद्दे तय किए गए हैं, जिसके माध्यम से आने वाले वर्षों में देश के विकास की ओर ले जाना है। और 9% प्लस ग्रोथ रेट का जो प्रोजेक्शन किया गया है, इसमें पूरा सफल होगा। उसके अलावा सड़क, इंफ्रास्ट्रक्चर, मैन्युफैक्चरिंग, टेलीकम्युनिकेशन, 5G, एजुकेशन में डिजिटाइजेशन, सबों को बहुत ही एक प्रकार से सहयोग दिया गया है और कोई अनावश्यक टैक्स का भार नहीं है। और आप देखें 1,40,000 करोड़ का GST आया है। तो माननीय प्रधानमंत्री की अगुवाई में जो देश आगे बढ़ रहा है, हम 9% ग्रोथ अवश्य प्राप्त करेंगे। वित्त मंत्री का अभिनंदन। ये बजट देश के प्रधानमंत्री, देश के वित्त मंत्री को कोटिशः धन्यवाद देना चाहिए, जिन्होंने देश की प्रगति के लिए नौजवानों को, किसानों को, युवाओं को और खास करके जिस विभाग का मैं मंत्री हूँ, इस विभाग में ग्रामीण विकास के लिए, चाहे ग्रामीण सड़क योजना हो, चाहे ग्रामीण आवास योजना हो, इन सारी योजनाओं को प्रोत्साहित करने का एक बड़ा टारगेट दिया है, इसलिए मैं धन्यवाद देता हूँ। Those are some reactions that have been coming in. Dr. Singh, if I can come to you, in the run-up to the presentation of the budget, we were talking about the need to maintain the growth momentum, boosting consumption, having money in the hands of people, so that this sort of cycle of growth could continue. What was your reading of the budget from that context? In what way does it empower the middle class, the weaker sections? Firstly, I must mention it is an employment-oriented budget. So when it's an employment-oriented budget, as an economist, I am most happy with it because it's creating jobs. And the jobs are coming from various sectors. Once it's creating jobs, it's automatically sustaining demand. Of course, their expenditure in Manrega, which is in continuation, is going to go up. They've also extended the food program till end of March that provides social security in that sense. Food and medicines are taken care of. So that continuity is there. I must mention two things which I thought are very important, and probably I must highlight them. One is the core banking extended to the post offices. Now that is a real financial inclusion, something which needs to be celebrated about. Just imagine the commercial banks were doing core banking for a couple of years, but post offices have not joined it, and I think that is something extremely important which is going to play a very big role in days to come. So as I said, it's a futuristic budget, and this budget takes care of many things.